My engagement with Pasha, some of you know his repertoire for over several years when he was part of One and a Half, and even before that, perhaps when he was a nascent rapper. But I know him only from the past few months. I was supposed to write a piece on him for my magazine, and I went and I was sort of blown away. You know, literally, I thought it's an easy assignment, but it was a very tricky assignment to enter the world of Pasha because it's many layered. He's extremely talented. He's not merely a rapper. For me, I'm not. I don't listen to a lot of rap, frankly, you know. But for me, the lure of Pasha is the poetry, the beauty of his songs. He's an intuitive poet, and what makes his work even more fantastic is that he's not formally trained in literature, language. It's just very organic. I mean, he's a precocious talent. You know, it's amazing, and presumably I'm also a speaker of Dakni, but to see Dakni um, transformed into this rhythmic, beautiful, performative language was a revelation for me, right? So that's what I love about you, Pasha. And Dakni Urdu, I guess a lot of you already know, but it's a language or a dialect. Some linguistic scholars argue that it is an independent language. It is a dialect or language spoken primarily by Muslims in South India, and it suffers from a double marginalization. So intersectionally, it is Urdu, which, because it's the language of Muslims, has the state patronage has declined over the decades. So that means Urdu is marginalized, and Dakni Urdu is marginalized at another level, because for a long time there is very little literature created in Dakni Urdu. So when a person like me or Pasha has broken that barrier, would study, read and write Urdu, it would be in the standard North Indian register of Urdu. But to privilege this sort of language of the streets, my language, his language, to own it and to, uh, give it, celebrate it as one of the languages of Bangalore, there is great beauty in that. So, with that, Pasha, I mean all this very sincerely. And like this scream, Pasha Bhai! This is something that you hear in sort of supposedly very elite club spaces. We heard it here. And then one day I was walking with him in the sort of lower economic neighborhood of Neil Sandra, which is home to him. I've sort of described it as a ghetto. Some people may find that definition problematic, but in this lower economic Muslim neighborhood of Neil Sandra, and you have these young boys who perhaps have bunked school, who are sort of just gallivanting around on their bicycles. And this is what, as soon as they see Pasha, they go like, Pasha Bhai, So he's become a sort of inspiration for a lot of young boys, 9, 10-year-old, 11, 12, 13. I don't know what he thinks. Does he want them to follow him? Follow the trajectory that his life has taken? So this is all in the sense of backgrounding who Pasha is and where he's coming from. So do you want to start off by telling us about your own journey? Where did you start from? It's been a long journey, even though you're very young. He's 24 years old.
So, but briefly, how did you get into rap and why did you choose to rap in Dakni? My name is Muhammad Afan Pasha, for those of you all who don't know. And I mostly rap in Dakni now, but when I started, I used to rap in Hindi, English, Urdu, and I'll start about my journey. Like rapping and writing in general for me started as a coping mechanism, like just to deal with what I'm going through, or the things that are happening in life. I never thought that I could actually do something, and I could actually achieve. I still don't feel like I've achieved a lot, but this is still something, right? So I started as a coping mechanism, but then people told me that I was good at it, so I went along with it. Um, it was not just rap at first. I used to write a lot of शायरीज आज नहीं तो नज़मा लिखते हैं, नहीं क्या तो भी एक लिखते रहते हैं. क्या तुम याद क्या है? तो Sometimes we lapse in Dakni. Please forgive us. क्या तुम्हें याद ही है बचपन के नज़्मा शायरियाँ? अब तो याद नहीं. एक छोटा क्या कि याद आ रहा हो. कितना गुरूर है गालिब तुझे अपने शायर होने पर, माना कि हमसे शायरी नहीं होती मगर दिल हमारा भी टूटा है. ऐसा क्या. I- मतलब लाइक तब वो मैं बहुत गालिब पढ़ता था. गालिब रंदे, फैज रंदे, जॉन रंदे, पूरा मतलब तब बहुत पढ़ता था. कई को बोले तो आई डिड नॉट हैव, लाइक आई थॉट दैट देर इज नथिंग इन द लैंग्वेज, बिकॉज बचपन से बात कर ले कुआरी, बचपन से बड़े भी हो गए. वी हैवंट कम अक्रॉस एनी ऑफ द लिटरेचर दैट वाज इन दखनी. राइट, सो आई नेवर थॉट ऑफ लुकिंग ऑल्सो. मुझे मालूम है पहले कैसा ढूंढना सो कैसा बेंगलुरु रुजू अगर को मारेगा तो क्या बिश नहीं आता उधर. बाद में मालूम हुआ कि दखनी है, लाइक हिस्ट्री है इसमें, लाइक there's people who's done this before me, who's ऐसा वैसा सब बाद में मालूम हुआ. तो उर्दू तब पढ़ता था तो लाइक दिस वाज सॉर्ट ऑफ पोएटिक चैलेंज टू जी जी हाँ. गालिब. क्यों कहता हमें रैप में ऐसा करते रहते हैं. अब केंड्रिक इज वन ऑफ माय इंस्पिरेशंस, लाइक वन ऑफ माय ह्यूज इंस्पिरेशंस. तो ऐसा चैलेंज करते रहते रैप में, लाइक पेन टू पेन. तो वैसा करते. बट आई यूज टू गो टू अ लॉट ऑफ ओपन माइक्स वेर आई showcase my शायरीज, and like somehow I slip my raps also into it. Then the people will know that okay, he's a rapper also. ऐसा वैसा कर को बोल को. तो like the writing journey has been like that. um, right now I think I'm gonna go back to writing shairi, or like go back to the poetic zone, because the album that I was working on, Bangalore Ka Patta, like it, the main focus of the album was to document the language of the streets, the language that my neighborhood speaks, right? To just to like पूरा एक कलेक्ट कर को टू स्टोर इट इन अ प्लेस, सो दैट द फ्यूचर जनरेशंस कैन like listen to what was going on. ये टाइम पर क्या बात कर लाइक था बेंगलोर, क्या बात कर लाइक था नील संदरगर को बोल को. तो आई लाइक टू लुक एट इट एज डिक्शनरी और encyclopedia of Wow. Dakni. So yeah, now I'm gonna move forward and अब जरा पोएटिक स्टाइल में जाना रहती. क्या तब करने का है वैसा. लेकिन मेरे हिसाब से तो तुम्हें जो लिख रही वो पोएट्री है. And we'll get to listen to some of his Right, for songs. sure. We'll force him to sing for us, even though there are no instruments. So so why Dakni? I mean, in this quest, what have you learned? So initially when I started writing and when I started rapping, I could rap. I could rap on a beat. I could flow on a beat. सब अच्छा कर लेते. सुने तो भी आदमी को पसंद में आता. But So you were rapping in Hindi or English? yeah, Hindi, because the main inspiration for me was Raftar back then. तो रफ्तार का सुनता मैं, ओ भाई जबरदस्त लिखो है आदमी, या लिखना ऐसा अगर को बोल को. तो हिंदी में ऐसा दिमाग गया भी नहीं कि हमारे इसमें लिख सकते हैं अगर को बोल को. देन आई केम अक्रॉस द बॉम्बे अंडरग्राउंड, द दिल्ली अंडरग्राउंड एंड बैंगलोर अंडरग्राउंड. ऐसा वैसा, लाइक एवरीवन इज representing their street, their identity, right? तो मुझे उससे पहले like I used to write and it did not feel like
um, I did not feel that sense of completeness. एक वो रहते हैं नहीं satisfaction, वो नहीं हो लगता भाई मेरी स्टोरी बोल रहा हूँ क्या कहीं को मेरी स्टोरी जैसा साउंड नहीं कर रहा है ये बोल को. But then I came across works of Nezi, Divine, Emiwe, Bantai, and all these people, and I was like, fuck. Like they are also rapping in a language similar to Hindi, but it's not exactly Hindi. It's the language that they speak, their neighborhood speak. उनके गलिया में ये बातचीत हो रही है. तो उनकी बातचीत में उनकी उनकी जुबानी उनकी स्टोरी बोल रही. तो मैं भी ऐसा करना बोल को लाइक. लेकिन अब बोलना कैसा करना क्या मालूम नहीं है. कैसा हमारे पहले एक रेफरेंस भी नहीं है क्या भी नहीं है कैसा क्या बोल सकती क्या सुनना चाहती है मैं क्या भी है वो करके बोल को. तो I started listening to the streets more कि क्या बातचीत चल रही है कैसा आदमी बात कर रही हैं. कौन कौन कैसा एक आदमी क्या तो पूछा अगर तो उसे रेस्पॉन्ड कैसा कर रहा है. बेंगलोर दक्षिणी में होंगे कन्नड़ा में होंगे तमिल में होंगे. बेंगलोर बहुत बातें करता भाई बहुत अलग अलग बातें करता खाली दक्षिणी खाली कन्नड़ा कर को नहीं को तुम्हें कौन सी बातचीत में बात करती हूँ उसे उन्हें वो बातचीत में तुम ना रिप्लाई करता बेंगलोर. लेकिन एटीट्यूड वो सेम रहता वो एक लहजा रहता उसका. That's a beautiful way to describe the multilinguality of our city. So ऐसा बोल को I started listening to it more and then I grasped on to the slangs and the words and like fuck मैं भी ये बोलता हूँ ये पूरा मैं भी ये बोलता हूँ ऐसी बातचीत करता हूँ. सो बेंगलोर बात कर रहा तो अब मैं ये बातचीत बोले तो सुनता हूँ उन्हें. दूसरे सुने दे नको सुने दे परवाह नहीं. मेरे साथ में जो 10 दोस्ता या फिर 14 या 20 दोस्ता बैठते हैं उनको सुन को उनको मजा आया तो बस मंजे गोल. द गोल वाज ऑलवेज दैट ओनली to give my people something that they can own proudly. I think I've achieved some of the like to some extent that has been achieved. So ऐसा दखनी में लिखना अगर को बोल को मुझे मालूम ही नहीं दखनी क्या नहीं कर को बोल को. मैं पहले लिखता but I could never finish a story. I could never complete a verse. It's always just some 12 bars or 10 bars or something like I could never give a complete story. So I started thinking like what should I write about to finish a story. So like this randomly occurred to me since Bangalore-ish ना तुझे सिखाया तो Bangalore की दास्तान लिख कर को बोल को. So that is when I wrote my first complete Dakni song which is called Bangalore की दास्तान. It's and since the album was like the album Bangalore का बट्टा that is when it started. उधर शुरू हुआ तो बैंगलोर की दास्तान इज द फर्स्ट कंप्लीट तकनी सॉन्ग जिसे लिखा है कंप्लीट स्टोरी मिली मुझे तब दिल को सुकून मिला और लिख सकता तो वो साल में 2017. ओके हमारी कॉलेज में आई स्टडीड इन द एनी जोसेफाइट्स हियर. लेट्स कहाँ गए तो भी यहाँ जो थी जोसेफाइट्स. I did my graduation from St. Joseph's Evening College. So first year में there was talent show. So I like all of us were supposed to do something. I was like अच्छा मुझे रैप आता मैं रैप पिच करेंगे अगर को बोल को. That is when I wrote बैंगलोर की दास्तान. But टैलेंट शो में मुझे स्लॉट भी मिला नहीं टाइम भी दिया नहीं तो परफॉर्मेंस नहीं हुआ वो गाना. आज पूरा बेंगलोर में परफॉर्म कर लेगा फिर रहा भाई. अब बॉम्बे में भी कर को आया. So, I've spoken to you earlier, and one very poignant statement that you made was you grew up in a milieu of violence. You even used the exact phrase, "We are the children of rowdies." Not talking Right. specifically about his father, but to explain the culture of violence that pervaded growing up in Neil Sandra. Then I sort of walked with him, promenaded with him in Neil Sandra, and each building, each corner is signposted in his memory with an event of violence, minor or major. It could be a scuffle, it could be a murder, right? So, and you can see that in the lyrics of his songs as well. So can you explain this? Are you exaggerating this culture of violence, or was there really this, there was so much violence while you were growing up? First of all, my father was also a gangster. Like, can't take that away from him. hand से hand दगा पूरा 7 बाप क्या बात कर रही हैं.
But yeah, I like to believe that my job is not to judge anyone or anything here. I am merely a reporter. तो जो होता वो बोलता हूँ मैं मेरे गाना में वो था अच्छा एग्जैजरेट करना उसे क्या करना लाइक आई कैन ओनली शो यू द मीनिंग और some poetry of what happened उस वो चीज़ जो हो को है एक मर्डर भी हो को है तो उसमें एक पोएट्री रहती है तो वो पोएट्री को आइडेंटिफाई करने का काम मेरा दूसरा से भी क्या भी नहीं आई डोंट हैव टू एग्जैजरेट लाइक तुम्हें अभी भी नीलसंदर को आओ अभी भी वो बात चलती है एक फैले एक वारम फैले इसका मर्डर होगा या फिर उसे डाला ले उधर इसे रोल कॉल कर डाले उसे क्या तो ऐसा चलते रहता उधर उधर ऐसा अगर को नहीं आदमिया खराब ही अगर को नहीं क्या भी वैसा नहीं बट डेस्परेट पीपल दे उनको हो ना वो सब चीज़ें उनको करेगा तो मतलब मजबूरी भी रहती है ज़रूरत भी रहती है आदत भी रहती है फितरत भी रहती है बोल नहीं सकते तो वो चलते रहता ये साइकिल चलने को रहता उन्होंने एरिया के अंदर भी करती एरिया के बाहर भी करती जिधर जिधर जाती वैसे चुनो एक उन्होंने खुद को बदल नहीं सकते और फिर उनको बदलने के वास्ते आती है आदमियाँ उन्होंने चलो कोशिश भी करेंगे कोशिश तो बहुत करती हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर व्हाट यू आर राइट सो आई मीन आई गॉट यूज टू दिस एक गली में चलेगा तो आई स्टेड एट अ प्लेस हमारा घर जिधर था उधर लाइक इट वाज द बॉर्डर ऑफ नीलसंदर लाइक द इनर बॉर्डर ऑफ नीलसंदर एंड वो साइड एल आर नगर शुरू होता अंबेडकर नगर एल आर नगर लाइक यू गो टू लाइक यू क्रॉस एल आर नगर एंड अंबेडकर नगर यू रीच कोरमंगला सो दिस इज अ स्मॉल गेटो there's a नाला वो जो डिवाइड कर रहा सो there's two areas here एक नीलसंदर which is a Muslim ghetto and एक यलार नगर अंबेडकर नगर वो साइड which is where there is Muslim population but majoritarily you find a lot of Dalits you find a lot of backward Christians ऐसा ये ghetto तो there's a नाला that's dividing तो इस इधर communal वायलेंस रहता लाइक शुरू होता सो दो आदमी के बीच में लाइक देयर इज ओनली टू इंडिविजुअल्स हु यू नो स्टार्ट फाइटिंग विथ ईच अदर बट इट्स क्विक टू टर्न कम्युनल लाइक हमें रात को 16 को रहती कौन की दो जने लड़ले को ही क्या की इधर उधर सो रात को 3 बजे आवाज आती क्या तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ सो लाइक नोबडी नोज क्या व्हाट वेंट रॉन्ग देयर खाली दो आदमियों के बीच में शुरू हुआ सो दो कम्युनिटी सब लड़ रही बोल को सो इट वाज इतना इजी था उधर क्या भी स्पार्क करने के वास्ते एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्स लाइक आई हैव सीन इट विद माय ओन आईज वी हर्ड अबाउट इट बचपन से काना में पढ़ थी बात के इन ऐसा कराती हूँ वैसा कराती हूँ बोल को बट एज आई ग्रू अप आई सॉ इट आई सॉ द पुलिस आई सॉ द पॉलिटिशियंस आई सॉ a lot of these people in higher places sparking up things like this तो वो ये सब इन्फ्लुएंस था लेकिन हमारे आदमी को दिखता नहीं वो उन्हें क्या समझती इन्हें इसका दुश्मन उन्हें मैं मुसलमान हूँ तो तेरा दुश्मन तू क्रिश्चियन है तो मेरा दुश्मन या फिर तू दलित है तो मेरा दुश्मन तू हिंदू है तो मेरा दुश्मन ऐसा सभी देख ले को उन्होंने लाइक दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द रियल एनिमी राइट सो ये सब शुरू होता एंड पीपल गॉट सो यूज टू वायलेंस दैट अब क्या तो बीच दुकान में दे 5 लाख से खड़े कि दियो भाई नहीं दिया उन्हें 5 मेरा 5 मिनट वेस्ट करता क्या तू कर को बोल को फाइट शुरू सो लाइक वायलेंस वाज गो टू अभी भी है वो अब रत्ती कम हो गया वो बहुत कम होगा अब Thank you. That's fascinating. It almost seems like a different city, a different country, even perhaps. But I live 5 kilometers away from him, so that should tell you a lot about how our urban geography is. I think. So, do we all want to listen to Pasha rap now? Pasha, what do you want to start off with? Bangalore ka pata. साहब नीलसंदर सुनाता हूँ Pasha Bhai. अब मैं नीलसंदर के बारे में बात कर लेगा था तो नीलसंदर सुनाने का दिल कर रहा So, will you also translate or should I help with the translation? I'm sorry, I'm not good with translate. I can't translate my work. His good friend Ojas Shetty, who's here, has worked very diligently on the translations. So, shout out Ojas bhai. Will you guys give me a rhythm or something? Yeah, I'll start off. Can you guys clap with me? Yeah.
So this is a song called Neil Sandar. I wrote this song because I wanted to talk about myself, about why I am like this. The song talks about like Muhammad Affan Pasha as a person, um, who is what he is because of Neil Sandar, because of the way Neil Sandar is, right? So I'll start off. एरिया नील संदर 47 बुजुर्गां बुलाती हेवन कलाकारी कैसी का तो क्लीन से छुड़ाती सेवन नींद से उठाती शीन में डुबाती जुम्मा टोपी तस्बी झुब्बा डाल लेक दीन में बुलाती पैदा 19 को हुआ 19 90 पर 8 जून के सौले रंग का पट्टा बोले रिश्तेदारा खून के देने वाला मालिक देता है बावाद ये हिदायत अब तक खस्सम उसकी मोहताज नहीं एक पानी की भी बूंद के इंसाना पो नहीं रखूं अल्लाह पो भरोसा नोड़ी दीनी फील्ड गल्लाटा कल्ला को सब होगा मोदी गोदी गोदाम डाले खल्ला को सब होगा बेंगलुर हिप हॉप को मई अंगली पकड़ चल्ला को सब होगा वोड़ी मन सर को होगा घुरनानी सब खड़को जख्मी दिल के जख्मा मिर्ची चुरनानी सब सर को रेशो हिप हॉप को समझ को आया उल्टा सीधा पढ़ को इसके आड़े ऐ तो छोड़ तू सबकी कुर्बानी अब कर को बचपन बारीक संदोरी मेरी ताकत कमजोरी मेरी तोड़े तो फिर बनाता जिंदगी लकोरी मेरी देगा में उंडले तो भी दुनिया की हिरिस करती गवाह है मालिक चार में बाटियों खटोरी मेरी निंजा हथौड़ी के नी तलवारा असलिक देखूं गुस्सा को अंतड़ा में निकाले फसलिक देखूं मम्मी का वाखा वनवास बेबसी तकलीफ देखूं वो भाई को हारिस छोड़ को दुनिया में सब चीज देखूं चिच्चा या शेरा मेरे दो भी इरफान अकबर पाशा अब्बू जान सब में बड़े नाम गौस सद्दर पाशा अम्मा भी अहमदां की तबलीगां के नाना जान सिर फिर मामूवा मैं भांजा उनका बब्बर पाशा देरी नी टक्कर पाशा थक जा रही कोशिशा में देख रहे सो क्या रे पूछ रही मैं बोलिया कोची का में मोहल्ला झोपड़ाएंगे इनको तब सिर पो 2 सीटां थे मुंह खोलेत माँ भाना ये पलेगा वो चीखा में पढ़ने में अव्वल नंबर आता पूरी क्लास में लिखता नहीं नोट सा रखता इल्म दिमाग में तरावैंग निकलता जमता नहीं था जमात में हेडिच में ज्यादा सिर झुकता कमिच नमाज में घर वाले अरमान थी सो औलाद तो बनता हाफिज अरब भी पढ़ने भेजते लेक जाता कंथा कांकिच स्कूल कॉलेज ऑफिस तक फेंका सा बंका मारिंस अटकेस तब मैयत पड़ती घर बचता टमटा पाटिच मडरांग का नील संदर ये खुनाले मिलगात पानिच ढोले तक घुसने डरती दे सिरगेट भिरका माचिस एरिया में किससे पूछ ले मुंह फट्टा दिल का साफिच खड़गा तो खिसना मुश्किल दुश्मन भाग मिलखा भागिच नाले कुलक को मैदान बल मारत मोहरी करने एक दिन नाड़ एक दिन मिलते डेड बॉडी दो पीसा में मजे में बचपने में सब कर को छोड़ इन सब में बड़ा वे करूं सो नई जिंदगी घोर इन सब में जवानी चढ़ लेक जा रहे नवाबी बढ़ लेक जा रहे रवानी रहबरां की खवाली बन लेक जा रहे गरीबी नंगा कर को लपट को खंबेक मारे हमें भी बेईमानी का निशाना झंडे पला ले नशे में डूब को बच्चा चुबाता बोटी करने वो टाइम पो गमगा था मई डोरेमोन नोबिता में काड़े तो खिस्या नहीं जा कौन से भी रोडी करने पंटर आंख खमता नहीं था क्या मानता शोपीसा में कसम खुदा की बोल रहा हूँ दर्द है 2 चीजा में एक बाबा खंदा देना 2 नसीब नहीं वो भी देने थैंक यू सो मच So I think if I embark on translating the entire song, it's going to eat into a lot of a time. Yeah. But I'm going to read this paragraph that explains the song. This has also been written by Ojas. Neil Sandar gives a glimpse into the origin story of how Muhammad Affan Pasha became Pasha Bhai. While growing up in Bangalore, engulfed in Neil Sandra's grimy milieu of violence and urban administrative neglect. Notoriously feared by many Bangaloreans, the neighborhood was known for crime, sheltering many rowdy sheeters, and its animosity with neighboring areas that, according to a legend, took generations to settle. So all this is part of the song. Neil Sandra is also testament to communal resilience and a multicultural Bangalore, known for standing up for each other. It is a place that doesn't let you give up easily. In the song, Pasha Bhai speaks about growing up in Neil Sandra,
recounting moments from his life from the time he was born till the passing away of his father. The story is of an unsuspecting young boy whose circumstances compelled him to grow up way before his time, as well as an ode to the neighborhood that continues to shape the person he is becoming. Punctuated with references to and metaphors of street games and the cartoons he watched growing up in the early 2000s, the song takes listeners into Pasha Bhai's personal life and elements that shape his artist/stage persona. The first verse is Area Neil Sandar 47, pin code 47. The elderly here call it heaven. Craftsmanship so precise, we get away with attempted murder even. Wake you from your slumber, drown you in your plate. On Fridays, make you wear skull cap, tasbih, jubba, and invite you to Islam. I was born on 19th of June 1998. He's a dark-skinned, brown, dusky boy, my blood relative said. Allah is the one who gives life, skin color, all things. My father said, swear to God, I'm not dependent on anyone for a drop of water even. And it goes on like this. Very complex emotions are conveyed here. It's sort of, there are layers to this. Do you want to rap another song for us? What do you guys You want to hear? have, बेंगलोर की दास्तां सुनते हैं. अच्छा, पाशा भाई नेक्स्ट भाई बेंगलोर की दास्तां पहले हमारे मेरे साथ गाती हैं. Like can you guys sing along? Yeah. Okay, those of you who know the song, please sing along. Yeah. बेंगलुरु की दास्तां सुनी तो होगी आपने, मारते सफैले और बात करते बाद में, दिल के साफ खाली अपनी बात में मगरूर, हमें एक जिगरा दूसरा डेयरिंग है, दो चीज़ां से मशहूर हमें गफूर, हमें सब में बड़े लेकिन सूच छोटी, सीधा क्या भी दिखता नहीं खाली दिखते नोटिस, एक पंटर आजू बाजू 4-5 शोपीस की 31 का बाबा एमएलए उसका बाबा पुलिस, हीरो खुद के वास्ते दूसरा को विलन, हमें दारू पीते नहीं पिलाते पूरे अंगूठिलम, हमें रुपए क्या चीज दुबई जाको कमा लेंगे दिरम, अपने एरिया में शेर पिच्चे गली में हिरन, हमें बच्चा बच्चा सिर फिरा सिर से पांव तक सही सब मालूम इच नहीं होता कर रही बात कब और फाइट कब, मई मई की बमड़ी हाँ सब भी उल्टी खोपड़ी के देखे तो भी पूछती क्या रे के नौकरी के कौन भी नहीं, सब भी खाली रोल काल के, जब में पैसे भर को रखते मेहनत के नहीं झोल झाल के, घर में खाने खाना नहीं ऐसे ऐसे शौक पालते, नसीहत देने वाले का मार को बक्का बोर्ड डालते, छोड़ जान दे क्या करना आज नहीं सब लाइन पो आती पटक पीछे क्या रोना, बात करेंगे भाई को वहाँ की भाई को वहाँ तोबा उन्हें सबसे बड़े सही को वहाँ, बेटी पढ़ना में कर बोलती शादी कर ले बैठ को खाती कई को आंटी है जुल्म करती अपनी बेटी पो, खाली घर संभालने के वास्ते तेज क्या शादी कर को दे 300, बेटे छोड़ते तिरिक ने फिर बेटी रखते खैद, अपने दाग आंगू छपाते और ढूंढते सब में ऐब, रत्ती हंस को बात करी तो छोकरी होगी चंचल की, काम से जर्रा लेट आई तो पक्का क्या की गड़बड़ की, घूर घूर को सबको उनकी नाक में दम करती, किसका पट्टा कौन इनको गाँव गली की खबर, भाई चक्कर नहीं था कि इनका कभी इनकी जिंदगी में लवर से मिलने गए नहीं कि इनो सुंदरी में शक्कर थी और साथ जासूसी रात दिन शर्लॉक तक हार मानना, ऐसे इनकी छानबीन क्या, ऐसे इनकी छानबीन क्या, बेंगलुरु की दास्तां क्या, पट्टे को चूल ज्यादा पट्टियां को हई बत्या, कल तक था शोना पर राजू ने भाई बन गा, सब समझे सब भी पर ये कौन भी नहीं समझा, मैं खुद दीवाना हूं देखो ये बैगन का, फुल रहते ये ताकि झुकने के गिर जाते, दम में था फिर भी कि भूखे पे छिल डालते, औकात बड़ी नहीं और छोटी चीज पसंद नहीं, प्रपोज भी करते सो हुक्के के श्रृंगार से, शादी तो कर लेते निर्णायक आता नहीं, फाइट मारना इजी हाँ लाइन मारना आसानी, अच्छी परेशानी होगी ना छाटां की, गाड़ी लिए लाखांगी पेट्रोल को कासानी थैंक यू सो मच थैंक यू. का नाम मोहम्मद इमराज अहमद, हमें प्यार से निम्बुदा बुलाते हैं. अस्सलाम वालेकुम. सो ईद का चांद करो भाई.
लाडीले बिल पर चिकरा लो हमें रसीदे उल्टेगा मासिक गाधो का दे ना अंगली छोड़ो हाथ इश्बिंगा होगा मेरा जिंदा होगा मेरे अंदर एक बाग भाई तेरा शेर खान जंगल से भाग गल्ला दबाने में असगर के बाप बुझती नहीं है क्या भी कंबल से आन संभल रे छाट बोले गो थे सभी थक्या बनाक सोले गो थे सभी खाली दिमाग चले गो थे सभी अब बोल रे छाट तोड़ लेना सोचो भी 16 से बनने का रैपर तखाब पसीदी कर रहा नेक्स्ट 20 में हर नहश नहीं क्या भी कैडर नसाब शुरू करे इतनी जीत के चीज ये भारी भरकम सबको आती पसंद मुपसंद सरनी है माँ की कसम सोमवार को एक बात इस खत्म हाथा गफलत नहीं करते नहीं क्या भी जतन खाली चमन लिखते कंत्री पना बहुत क्या भी घमंड नहीं मैं शर्मिला था सोच मिल ले जख्म को हल्दी लगा को चीना से क्या सब कुछ छतरी बना को गटरान से उठको मैं अबरान तकाया खत्मा से उठको मैं खबरान तकाया कचरा समझ को घिनाती थी जिनको अब झगड़ाएंगे जिनको इन तगड़ा कमाया भाई तगड़ा कमाया मैं रिश्ते बना जज्बा बताया मैं किस्से बनाया चबड़ा हलाया मुंह पे फेंका कंपूरा नक्शा फटाना भाई जिसने बताया वो करना काम रहना काम इच्छा आदमी मेरे पढ़ना पवा आको कामयाबी बेटी ढूंढले को मेरे में खामियाबी आया सामने तो बोलती सो क्या मियाबी क्या भी याद नहीं भूल गए सो क्या छोड़े सो क्या तो खुल गए सो क्या छोटे बड़े बता उड़ रहा सो क्या चौदह तो सिर देते बुल्ले पर जहाँ उल्टे पवा निकल ले पाक पत्नी ये तेरी मुंह पर निखर साफ साफ उछली कर डाल रहा नहीं ये टीवी चाट ना खरिया उदा पीला पंचाये लाल बाग कौन भी नहीं आस पास लीगी दूसरी मेरी वन एंड हाफ खानदान से निचपुरी मेरी बैठ को झूम ना पीड़ी पूरी तेरी बीट पर धूम ना मिदिश पूरी मेरी ताले तो कनपट्टी फटना आंकड़े तो ज्यादा कर डाल दी खतना अंख्या में आगे तो बर्बादी सब भी अंख्या मुछानी फ्लो जल जल्दी छपना करते सो कामा गुछंडे नामा चलते अलावा बनंगे पावा तलवे पर रखना सो दुनिया को हारत इज्जत दे डाले तो बंदे बावा ताका झाकी करे ताम चीनी सूरत कर को भेजती लाल पीली देख इस वाले बोलते बहुत सुने रैप लेकिन तेरे सरकार पर काम भी नहीं गाने मेरे बजरी सीन तमाम बाजू वाले की हुई नींद हराम जर्रे दिन में देखो दूसरे रैपर आए नमाज के बाद होती ईद का चांद Thank you. Thank you so much, Bangalore. Thank you, Pasha Bhai.